जय श्री माता जी। दिवाली पूजा के इस पवित्र पावन अवसर पर एनजीपी के इस सेमिनार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र में हम दिवाली के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे। श्री माता जी ने अपने बहुत सारे प्रवचनों में दिवाली और श्री महालक्ष्मी तत्व के बारे में समझाया है। उन सारे तत्वों के बारे में बात करना असंभव है, तो आज के सत्र में हम 4 मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हमने श्री माता जी के कुछ प्रवचनों का यहाँ पे सारांश लिया है। सबसे पहले, दिवाली अपने और सबके प्रबोधन के लिए है। दूसरा, गृहलक्ष्मी तत्व और उसका महत्व। श्री लक्ष्मी तत्व का अर्थ क्या है। उसके बाद दिवाली का महत्व और अपने अंदर की ज्योति का महत्व, और आखिर में अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के साथ हम ध्यान करेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं, निर्मल ज्ञान प्रोग्राम के इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि श्री माता जी के अलग अलग प्रवचनों का, अलग अलग तत्वों का जो सारांश है वो एक सीक्वेंस के रूप में, सेमिनार के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारा कार्य सिर्फ माँ का माध्यम बनना है। निर्मल ज्ञान ये श्री माता जी से ही हमें प्राप्त होता है, तो उसी को समझने के लिए हमने यहाँ पे सबटाइटलिंग भी लगाया हुआ है, ताकि जो स्पीच इंग्लिश में या अन्य भाषा में है वो भी हम समझ सकें। हम ये भी दोहराना चाहेंगे कि आप पूरा स्पीच जरूर सुनें, क्योंकि जिस तत्व के बारे में आज हम बात करेंगे उसका सारांश छोटे छोटे क्लिपिंग्स के रूप में हमने इस सेमिनार के लिए चुना हुआ है। और हमेशा जब हम श्री माता जी का प्रवचन सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे पहलू, बहुत सारे एस्पेक्ट्स श्री माता जी बताती हैं, लेकिन आज के सत्र में हम इन 4 पहलुओं के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो छोटा सा पार्ट उस स्पीच का हम सुनेंगे। तो जब आप पूरा स्पीच सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आज के सत्र में हम सिर्फ हिंदी भाषा में बात करेंगे। इसी दिवाली पूजा का जो सेमिनार का इंग्लिश पार्ट है वो निर्मल ज्ञान प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम सामूहिकता में परम पूज्य श्री माता जी तो साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी असीम कृपा से आज के सेमिनार को हम आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं और आपकी कृपा से हमारे अंदर की ज्योति को प्रकाशित कर दीजिए, और जो भी निर्मल ज्ञान आप हमें देना चाहती हैं इस सेमिनार के द्वारा वो हमें ग्रहण करने की अनुभूति प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। अब हम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे और उसके बाद 3 महामंत्र गाएंगे। तीन महामंत्र गए।
May God bless. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. दिवाली ये अपने और सबके प्रबोधन के लिए है। यानी क्या कि दिवाली हमारे एनलाइटनमेंट के लिए। तो इस विषय में बात करने के लिए हम श्री माता जी की एक बहुत सुंदर अमृतवाणी जो दिवाली पूजा 2002 में मानी दी थी उसके बारे में समझेंगे। तो एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन यानी जागृति, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से माँ ने इस प्रवचन में बताया है। श्री माता जी कहती हैं कि सिर्फ आपका खुद का एनलाइटनमेंट या जागृति नहीं, सबका एनलाइटनमेंट, सबकी जागृति होनी चाहिए। दिवाली का उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसका प्रकाश जागृत हो। ना ही केवल वो जागृत हो बट हमें उसे बढ़ाना भी है। इसी शुद्ध इच्छा को हम दियों के रूप में माँ के चरणों पर प्रकट करते हैं और माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी आप हमारे इन दीपों को हमेशा जागृत रखिए। दूसरा, हम ये भी याद करें कि हमारे साथ सारे विश्व में हजारों दीप जागृत हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो सहयोगी हैं। तो असली दिवाली यही है, जिन सारे सहयोगियों के दीप जागृत हैं वो सब दीपावली के रूप में माँ के चरणों पर जल रहे हैं। श्री माता जी ये भी कहती हैं कि सिर्फ हमारा दीप जागृत होने से काफी नहीं, हमें दूसरों का भी दीप जलाना है। ये कैसे करें? हम दूसरों के अंदर का प्रकाश जब जागृत करेंगे, उन्हें आत्म साक्षात्कार देंगे, उन्हें सहयोग के बारे में बताएं। बहुत सारे लोग अज्ञान में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें रोशनी दिखानी है। जैसे एक कैंडल या दीप दूसरे कैंडल को रोशनी दे सकता है, वैसे ही हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश, क्योंकि वो जागृत है, हम उसकी रोशनी से दूसरों को भी जागृति दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा श्री माता जी कहती है। इसलिए
देखो आ गया होगा साउंड, स्टार्ट कर देता हूँ। तेरा साउंड आ रहा है। ओह शिट। No use talking about it. No use convincing about it. What works out is your desire. Simple as that. The power of desire within you works it out. There are many who are not here, who have got their realization all over the world. I remember all of them. And all of you should remember them. Today is a nice day when we can think of all those who are enlightened in this world. That's the real Diwali. The enlightenment of human beings. It's not candle, it's not some lamp, but human beings. If they are enlightened, then there's no problem anymore left. The problems come with the people who are not enlightened because they are in the darkness. They are groping in the darkness. And some of them don't know also that they are completely ignorant of realities. Once you come to Sajog and enlighten yourself, you see in that light, what is good and what is bad, to begin with. And then you grow into it beautifully, just like these flowers, who are all the time happy, all the time giving you joy. In the same way, when you are enlightened with that light, you don't seek anything. You got everything within you. Keep the lights
on. But the another thing you can do is, with your light, you can enlighten other people. Like we have done here, we had enlightened one candle, with that we have enlightened all of them. So you all can do it because you have got that light within you. With that light, you can enlighten others and they can feel their joy of their spirit. It's something to be seen now. Like so many lights you have put. In the same way, you are the lights for the whole world. It's not sufficient that you have got the light, but also you have to give light to others. You have to enlighten others, just like these candles. Once you start doing that, you will realize what you have got, and then you will respect yourself, and you will behave in a manner that behoves a saint, could be a sage, without proclaiming anything. Inside your being, you just develop that beautiful, extremely beautiful temperament that is joy giving. You don't want to give any false ideas about yourself, because whatever is the truth is with you. There's no need to tell something untruth about yourself. People will realize that you are realized source. They will just feel your subtle nature, your reality. Whether you come from India or you come from England or from America, you all have that ocean of love and knowledge within you. Be sure that it's all there. Only you first enjoy your own ocean of love. First you enjoy that, and then you can enjoy in others. I don't have to tell you that you love each other or anything. You just love. You just understand. You just spread your light among yourself. Sometimes you get frustrated with other people in your country, maybe in your city, maybe in your village, that the people who are not yet enlightened. But best thing is to work it out. You have to work it out. I had first one lady, very old lady one, who got her realization from. And then you all are here. In the same way, you all can also do the job of realization. For that, you don't need any calculations. You don't need any thanksgiving. It's just there and it works out. What do you do for a light? Just see. You just put near the candle and you get the light. In the same way it is. Your enlightenment is such that it will give light to thousands and thousands of people all over the world. As you know, there are many countries whom we have to still approach.
But we will do that. Just locate and find out where do you have to go and where you have to work. Firstly, you are capable of giving realization. You are. Have confidence that you can give realization to people, for which you don't need any help. Single person can do it, thousands can do it. It's very important for the Diwali of the whole world that we should give realization to people. Very important. जय श्री माता जी। जैसे हम सब जानते हैं कि नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु के अवतरण हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों ने कितना मेहनत किया है हमें एक अमीबा से इतना सुंदर मनुष्य बनाने के लिए। तो ये जो विकसन का काम है इन्होंने किया है, और जो हम 108 नाम बोलते हैं श्री लक्ष्मी के, उसमें अनेक लक्ष्मियों के बारे में बताया है जो हमारे उत्थान के लिए हमें मदद करती है। उनमें से एक है श्री गृह लक्ष्मी, और ये हमारे जो घर के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्यों है ये आज हम समझेंगे। अगर हमारे गृहस्थ जीवन में शांति नहीं है तो हम सहयोग में विकसन कर ही नहीं सकते। हमारी जो आध्यात्मिक विकसन है वो भी बहुत प्रॉब्लम में आता है। और ये क्यों है, ये श्री माता जी ने 1988 में श्री फातिमा बी पूजा में उन्होंने बहुत सुंदर तरह से बताया है। उन्होंने कहा है कि श्री गृहलक्ष्मी, जो घर की जो गृहलक्ष्मी है, उसको इसीलिए बनाया गया है ताकि वो जो घृणा है, जो बर्फीले समान घृणा है, उसको बेअसर करने के लिए। और वो इस तरफ करती हैं, वो है उनके प्यार से। तो हमारी जो कुटुंब है उसके अंदर जो पति और बच्चों के बीच में जो घृणा है, जो बच्चों के बीच में जो घृणा है, और कुटुंब के लोगों के अंदर जो घृणा है, उसे निकालने के, उसकी जो फ्रिक्शन जो बोलते हैं, घर्षण, जो तनाव, जो टकराव है, उसको निकालने के लिए और घर में शांति स्थापित करने के लिए गृहलक्ष्मी का तत्व है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर शांति है, क्या हमारे घर में शांति है। और ये गृहलक्ष्मी जो है वो केवल पत्नी पे ही नहीं है, वो हमारे जो हम पुरुष हैं उसके लिए भी गृहलक्ष्मी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है कि अगर हम जो हमारी पत्नी है, जो गृहलक्ष्मी है, उसके आदर करें, जब हमें समझ में आए कि ये इतना मुख्य कार्य है, ये जो धीरज का जो प्यार है, जो इस समाज को बनाती है, जो गृहलक्ष्मी, उसके लिए जब हमें आदर होती है तो हमारे अंदर भी गृहलक्ष्मी तत्व बढ़ता है। तो एक है जो स्त्री जो है वो गृहलक्ष्मी तत्व को घर पे बढ़ाती है, लेकिन जो पुरुष है वो जब आदर करते हैं इसका, तब हमारे अंदर गृहलक्ष्मी तत्व बढ़ता है। हम घर की जो शांति है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम समझते हैं ठीक है, लेकिन वो बहुत मुख्य है। दूसरी जो चीज है वो है कि गृहलक्ष्मी को अपने ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए, और जो वो इतना मुख्य कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो आधुनिक जीवन में हमें लगता है कि बाहर काम करना चाहिए, कि हमारे काम में वृत्ति होना चाहिए जब हम काम करते हैं, और उसकी वजह से अगर नहीं करते हैं तो आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो ये पढ़ाई करने से या बहुत पैसे कमाने से ये गृहलक्ष्मी तत्व आता नहीं। अगर गृहिणी अनपढ़ भी हो
लेकिन वो समाज के लिए बहुत काम कर सकती हैं। और ये जो एस्पेक्ट है हम पुरुषों में होना चाहिए और रेस्पेक्ट होना चाहिए, हमें मान देना चाहिए, तभी हमारे अंदर गृह लक्ष्मी तत्व बढ़ता है। तो जो गृह लक्ष्मी की जो तत्व का जो मेन मुख्य चीज वो है प्यार। दूसरा कि घर्षण निकालना, तनाव निकालना, सारे टकराव जो है हमारे कुटुंब के अंदर, हमारे सहज कुटुंब के अंदर जो हमारी सामूहिकता है और पूरे समाज में प्यार फैलाना, यही गृह लक्ष्मी तत्व का मुख्य तत्व है। और उसके लिए बहुत हमें उदार होना चाहिए। हमारे जो प्यार है, हमें जो धैर्य है, उसी से ये बढ़ सकता है। तो आइए हम ये जो सुंदर श्री माता जी का जो गृह लक्ष्मी तत्व का श्री फातिमा बी पूजा 9888 की जो अमृतवाणी है उसे हम सुने। While this principle of the Graha Lakshmi was specially created to overcome that hatred, to subdue that icy stuff called hatred, to remove from the minds of the people hatred, this Lakshmi, Graha Lakshmi principle was created. How? In the family, when you have a household, the Graha Lakshmi principle has to subdue the hatred between the children, between the husband and the children. But if she herself enjoys her hatred, then how can she subdue it? She is the source of that peace which subdues hatred. Now in India we have joint families. You too have relations like uncles, aunties, this, that. The housewife's job is to smooth out all angularities of people which creates friction. Now the man has to worship a housewife. Said so yatra narya pujyante tatra ramante devata. Wherever the housewife is respected, there only the gods reside. In our country, I must say, credit must go to the housewives. Because we are no good for economics, no good for politics, administration, hopeless. Menfolk are useless. They don't know any household work or anything. Women have kept it to themselves. But our society's first class is maintained by the women of the household. So the man has to respect the housewife. That's very important. If he does not respect his housewife, there's no possibility of any Graha Lakshmi Tattva being maintained. It's like the preservation of that principle of a housewife. But some men, many of them, think that it is their birthright to ill-treat their wives, to torture them, to say all kinds of things, to be angry, if she is a good woman. But if she is a nagger, if she is a bhoot, then they are subdued, completely subdued. If the wife is a bhoot, then the husband always tries to please her and be extremely kind to her. You know, she is a bhoot after all, be careful. Don't know what time the bhoot will come like a snake on you. And if she knows how to nag or to argument, then also they are afraid. There's no love. They have no love or respect for her. But they have an awe, a fear. And they are afraid of such a woman. Now some women think if they become flirtish, then the husband are better controlled. But their basic principle they lose. The basic Shakti that they have, they lose. And they land up in difficulties.
So the basic principle of a Graha Lakshmi is to respect her chastity. To respect her chastity, outside, inside. That is the steadiness of it. Of course, most of the men take advantage of it. If the wife is docile or obedient, they make it a point that they just rule the wife left and right. All right? But this woman, the housewife, has to know that she is not docile. She is obedient to her own righteousness, to her own virtues, to her own qualities. If the husband is stupid, all right, he's stupid like a child, finished. But the husband has to know that he must respect, otherwise he is a lost case, he's finished. He's good for nothing. First thing is that you must see the woman in the household is respected as a Graha Lakshmi. Then the blessings flow. But in no way he should insult her or be unkind to her and raise his voice or say things to her. But the wife has to be the one who is to be respected. I have so many times said, your wife is dominating, give her 2 slaps on the face, of course, no doubt. She has not to be dominating. She has to remove the dominating forces of others. She is the source of peace. She is the source of joy. And she is the peacemaker. If she is the one who creates problems, then you can slap her nicely, bring her to her shape. It's all right. So it's a Graha Lakshmi Tattva is mutual. It doesn't depend only on the wife or the husband, but both of them. So once if you are making your wife suffer, your left nabi can never improve. Or if you are a bad wife, your left nabi cannot improve. Now in the West, the problem with the women is this, that they don't realize what is their power. An 80-year-old woman also would like to look like a bride. They do not feel their dignity and enjoy their dignity within themselves. They are the queen of the house. But they want to behave like cheapish, childish, young, frivolous girl. They don't feel the dignity of their being. They talk too much. They behave in a manner that doesn't behove a housewife. Like they'll take out their hands, talk like this, as the fisherwomen do when they sell their fish to someone and when they have to fight. Or they shout. Sometimes they shout also. I mean, I've heard they shout. And sometimes they beat their husbands. That's the limit. They start always comparing themselves with the husband to begin with. Like, I am such a rich man, a rich man's daughter. I am from such and such family. My husband is from such a low family. He has no money, nothing. He is not educated, so he'll treat him. Treat him in a manner that shows no respect. Such a woman will lose all her powers. Also in her own ways, she will feel guilty. She'll feel guilty because, first of all, nobody has right to look down upon anyone whatsoever, in Sahaja Yoga especially. Then to look down upon your husband is something unbelievable. He may not be a Sahaja Yogi, all right? He may not be up to the point. But by your behavior, by your strength, by everything, you can save him. But why are you losing yourself?
by dominating others, by strangling others, by making your husband a very sort of a frog in the well, telling him, oh, we both are, after all, we should enjoy, let's have our house separately, nobody should come in the house, even a rat won't enter that house. Even to say, oh, these are my children, my husband, myself, is the negative of Sahaja, is a negative form of understanding. These are absolutely absurd things. They do not look like for any Sahajogi or any Sahajogi. All this kind of selfishness, all this kind of seclusion is against Sahaja. But a thing of a housewife is, oh, now, how much should I prepare? For example, there will be 50 persons coming. So the husband says, but only 10 are coming. Why do you want to have for 50 persons? But maybe they would like to eat more. But then why do you have 50 plates? Maybe they might bring their friends. So she thinks of her generosity. She enjoys her generosity. I have known many like that. Those who say are not even Sahajoginis. They'll say, then, will you come, sister-in-law, will you come for dinner? Oh, I'm not coming. You too many things. Not coming. No, I'll cook very few things, but please come. Then she just starts thinking immediately, what vegetables are available in the market? What should I get? What is the best? I mean, I'm not their guru. I'm not their mother. I'm just a relation. But they want to express their love through the food. They are the giver of food. Annada. They are the Annapurnas. And this is one of the qualities, the generosity if a woman doesn't have. She is not a Sahajogi by any chance. Take it from her. Husband may be little miserly, doesn't matter. But wife has to be very generous. And sometimes she secretly gives money. Not to her own children, but to others. Such beautiful women have to be there in Sahaja. But I feel so sorry sometimes that the attack comes from the women of Sahajogi, not from the men on me. I am a woman myself. I feel shocked that the women should attack me like this. For what? In Sahaja, there is no domination of any kind. But all this so-called idea of servility and domination comes from the false ideas you have about your own dignity, about your own understanding. You are not aware of yourself. You do not know that you are the queen. Nobody can dominate you. Who can dominate? The lady who rules the household. If supposing the husband says, I don't like this color, all right, leave it for a while. Then somebody will come and say, what a nice color. He says, such a nice color. Oh, don't change it. The woman must understand the men. They have big eyes. They are not microscopic. They see everything in a big way, you see. So today they will say something. Tomorrow they will forget about it. And they don't have microscope. They are too above these things. They are above these things. You must understand as they are. But if he sits on the horse, I must also sit on the horse and fall down. If he goes for skiing, I'll also go for skiing. If he develops his muscles, I'll also develop my muscles. It is coming to that point. I mean, women start looking like nothing on earth. You don't know what sort of women these are with big, big muscles. You without any mustaches. So this kind of stupid ideas we have. But there is no subordination of any kind. You are subordinated to your own dignity.
to your own chastity, to your sense of honor, and above all to your righteousness. Because you are in charge of that. The man who is in charge has to look after that side. How many quarrels you create? All to your righteousness. Because you are in charge of that. The man who is in charge has to look after that side. How many quarrels you create? How can you be quarrelsome when you are supposed to become the peacemaker? Supposing we send two peacemakers to some country to make peace and they cut each other's throat. What will you say to such thing? You are the one who has to smooth down everything. You have the one who has to bring such expression of love, such sweet things, that the family itself feels rested in you, secured in you, because you are the mother. The family must feel secured within you. And this love is your power. This is your power, that you can give love. And giving love, you will find you will always enrich yourself. जय श्री माता जी। अभी हम श्री लक्ष्मी जी के अलग अलग नामों का महत्व समझेंगे। 1987 में पुर्तगाल में दिवाली पूजा जो हुई थी, उसमें श्री माता जी के चरणों पर संस्कृत का श्लोक जिसमें लक्ष्मी जी का वर्णन है वो प्रस्तुत किया गया था। इस पूजा के दौरान श्री माता जी ने गा रहे सहयोगियों को बीच में रोका और समझाया कि यह संस्कृत का श्लोक का महत्व क्या है, इसे कैसे गाना चाहिए। तो माँ कहती है कि हमें बहुत ही धीरे से, आराम से, विनम्रता के साथ इन शब्दों को समझकर गाना चाहिए। यह संस्कृत देवों की वाणी है। जितने आदर के साथ हम ये श्लोक या मंत्र माँ के चरणों पर समर्पित करते हैं, तभी हमें वाइब्रेशंस का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये उस पूजा में गलत गाया गया था, यानी सब सामूहिकता में नहीं गा रहे थे, तो श्री माता जी कहती हैं कि वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, वाइब्रेशंस रुक गए हैं और सहस्रार पकड़ रहा है। तो श्री माता जी ने सबको रोककर समझाया कि हमें कितनी विनम्रता के साथ, कितनी सामूहिकता के साथ एक धुन में गाना चाहिए। श्री माता जी ये भी कहती हैं, जब हम मंत्र पूरे श्रद्धा से गाते हैं, पूरे उनको समझ के गाते हैं, तब उसका इफेक्ट, तब उसका परिणाम हमारे चक्रों पर और हमारे ध्यान की स्थिति पे होता है। तो चलिए तो समझते हैं कि अलग अलग लक्ष्मियां जो हैं, श्री लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग्य लक्ष्मी और योग लक्ष्मी, और ये सारे श्री लक्ष्मी जी के गुणों को हमारे अंदर हमें विकसित करने हैं। आखिर में श्री माता जी ये भी कहती हैं कि हमें इन सभी लक्ष्मियों का महत्व समझना है और उन्हें अपनी दिनचर्या में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना है, ताकि जो आशीर्वाद रूप हमें इन स्तोत्र से, ध्यान से प्राप्त होता है, वो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में उतर जाए। उसके बाद श्री माता जी कहती हैं कि लक्ष्मी जी का स्थान हमारे नाभि पर है, लेकिन उनका कार्य महालक्ष्मी नाड़ी पर, यानी सुषुम्ना नाड़ी पर भी होता है, और उनकी शक्ति अपने मस्तिष्क में कार्यान्वित होती है या विकसित होती है। तो ध्यान से जब हम उनकी शक्ति अपने अंदर जागृत करते हैं, तब हम विराट के अंग प्रत्यंग बन जाते हैं और हमारा उत्थान महालक्ष्मी के तत्व से हो जाता है। श्री माता जी ये भी कहती हैं कि हमें लक्ष्मी जी के सभी गुणों को
अपने जीवन में अभ्यास करना है, ताकि श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे उत्थान के मार्ग पर हमें हमेशा प्राप्त हो। जय श्री माता जी। Now, do you know the meaning of all these Lakshmis? Can you tell them? Or should I tell? Keep it on this side. One, yes? Give me the pages. This one. Questo è solo agganciato. Lower. This one is lower. Can I have my spectacles? No, I can. Now, first is the Adya Lakshmi. Adya is the one who is the primordial Lakshmi. Now, as I told you about that, she came out of the sea. So, that's what we call, Christ's mother was called as Maria, because she came from Mary. People don't know why she was called as Mary. My name also is, as you know, is Neera, meaning coming from water. Then the second one is Vidya Lakshmi. She is the one who teaches you the technique of handling the divine power. Now, this is to be understood very well. What is a Lakshmi? Lakshmi is graciousness. So she teaches you how to use this power with graciousness. Now, this is what is the blessing going to you, so that to you the blessing, so that you also are blessed, as well as those people who will meet you will be blessed with Saubhagya. Amrita Lakshmi. Now, do you know the meaning of all these Lakshmis? Can you tell them? Or should I tell? Keep it on this side. One, yes? Give me the pages. This one. Come mettete questo qua. Questo è solo agganciato. Lower. This one is lower. Can I have my spectacles? No, I can. Now, first is the Adya Lakshmi. Adya is the one who is the primordial Lakshmi. Now, as I told you about that, she came out of the sea. So, that's what we call, Christ's mother was called as Maria, because she came from Mary. People don't know why she was called as Mary. My name also is, as you know, is Neera, meaning coming from water. Then the second one is Vidya Lakshmi. She is the one who teaches you the technique of
handling the divine power. Now, this is to be understood very well. What is a Lakshmi? Lakshmi is graciousness. So she teaches you how to use this power with graciousness. Now, this is what is the blessing going to you, so that you get the power of Adya Lakshmi, by which you become like water. Now, what is the water? It has a cleansing power and it shines. Without water, we cannot exist, it's life. So, that's the first blessing for you, is that your face shines with Adya Lakshmi, that you become cleansing, and that you can sink all that is material, all that is light can float on you. Now, the Vidya Lakshmi is the one, as I told you, gives you knowledge. Knowledge how to handle the divine power graciously. I'll give you an example. I've seen many people, when they give bandhan, it's such a crude way that no, it is not to be done. It's a Lakshmi's blessing. So how you do it? Very carefully. You see me, how I give always. I never do that way. I cannot. Even if with respect, with grace. She represents the respect part of it. And that you get, that knowledge, how to do it gracefully. Everything to be done gracefully, in a manner that looks gracious. See, some people who talk have no grace. Some people who give knowledge of Sahaja Yoga also have no grace. And they talk in a disgraceful manner. So all the grace, how to use the knowledge of the divine, is given by Vidya Lakshmi. Now Saubhagya Lakshmi, she is the one who gives you good fortune. Good fortune doesn't mean money, but it means the grace of money. Many people have money, but it's like money on a donkey. You do not find any grace in that person. Or it doesn't also mean, Saubhagya doesn't mean only money. It means all the good luck. All the good luck in everything in a very gracious manner it gives. To you the blessing, so that you also are blessed, as well as those people who will meet you will be blessed with Saubhagya. Amrita Lakshmi. Amrit means the one that is the nectar. If you take that, you will not die, means eternity. So she is the one who gives you the life of eternity. Graha Lakshmi. Graha Lakshmi is the deity of the family, the one who is the deity of the family. Now, any housewife need not be Graha Lakshmi. She can be a shrew. She can be a horrid thing. The deity of the household. If she resides in you, then you are a Graha Lakshmi. Otherwise, you are not. Then there is Raja Lakshmi. She is the one who gives grace to the kings. If the kings behave like servants, then they are not called as kings. They have to behave in a dignified manner. The dignity, the majesty of the king comes from the Raja Lakshmi in him. But a Sahajogi need not be trained. He walks very straight, in a very stately manner. In his movement, he is stately. He is very majestic in handling people. He is very gracious in doing anything in such a manner that people think, oh, here comes a king. Satya Lakshmi. That is, that you get the awareness of truth. But apart from that, the awareness of truth is there, but to put the truth forward in a gracious manner. Not to, now this is the truth, have it. Not like that.
You don't have to hit people with the truth. You have to put it in a flower and give it to them. That is Satya Lakshmi. Of course, the all Lakshmi Tattvas are the parasympathetic powers within us, but they are actually expressed in our brain. Brain is the Virata, is the Vishnu when he becomes the Virat, the Akbar. So all his powers, these are especially these powers, are in the brain. So the brain itself spontaneously behaves in such a manner that people think that this is a special type of a personality. Then we have got Bhogya Lakshmi, by which you know how to enjoy. A Sahajogi always knows how to enjoy everything. He doesn't the Sahajogi is never worried type. Anything he can enjoy. Once we climbed a very steep place called Palitana. It was about 6 miles, about like that, as if walking for 6 miles. Climbed up. I reached there. I saw the beautiful carvings. I was not tired at all when I saw the carving. And I was telling my son-in-law, see, every tail of the elephant is made differently. He says, Mother, I am panting here. How can you see the tails of the elephant? It is because I can enjoy. You should be able to enjoy anything. Now, supposing you see something absurd, ridiculous, then you should laugh and enjoy. This is the ridiculous thing, you see. It is absurd. But one should not get angry with somebody because somebody is absurd or funny, but should make it enjoyable. So that is the greatest, I think one of the greatest blessings, that she gives you the power to enjoy things. Otherwise, whatever you may try, people don't enjoy anything because they have become so ego-oriented that nothing goes into their heads. They have to be tickled here with the electrode. Yoga Lakshmi, the one who gives you yoga. That power is within you. That is the power of Lakshmi within you. Means you give others the yoga. Now when you give the power of yoga to others, when you use your power of yoga, then you don't behave like a monkey or a donkey or a horse, but you do it with grace. Do it in such a manner that it is very gracious. That is what you call, संस्कृत में भद्रता को कोई शब्द है क्या इंग्लिश में? भद्रता. Gently. In a gentle, dignified, majestic way. Gentle, dignified, majestic way. 3 words for 1 word. So, this is what it is. And now when you have sung it in this manner, this power has been bestowed upon you. Now, even if you want, you cannot behave indecently. You are fixed. Alright, thank you very much. So, mantras should be said deliberately with understanding. Like the one you have made one poem, song. In that you sing in a proper way. Never just go on, Shri this, Shri that, Shri. No. It's like taking a roll call of the Lakshmis. Are you there? Are you there? Are you there? Like that. So now do it in a very deliberate manner and with due respect and graciousness. Because especially with the Lakshmi's thing, you have to be extremely gracious. You have to use very gentle words and gentle tunes and gentle
notes. All right. जय श्री माता जी। आइए अब हम जो दिवाली की जो महत्व है उसे हम आज समझेंगे। जैसे हमने जो पहली स्पीच सुनी, अमृतवाणी जो आज की सुनी, उसमें हमने समझा कि जो दिवाली है वो है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसका जो प्रकाश है जब वो प्रज्वलित होती है वो ही दिवाली है। और जब बहुत सारे ऐसे दीप प्रज्वलित होते हैं तब वो एक दीपावली बन जाती है। और हमें सहयोग का बहुत आभार होना चाहिए, श्री माता जी के बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर आत्म साक्षात्कार दिया कि हमारे दीप को उन्होंने जलाया है। 1988 की जो अमृतवाणी है दिवाली पूजा की, उसमें श्री माता जी ने एक बहुत सुंदर तुलना से हमें इसके बारे में बताया है कि हमारी जो दीप है उसके 3 भाग होते हैं। एक है उसका पात्र, मतलब कंटेनर, जिसके अंदर तेल है और वो दीप है। तो हमारी जो देह है, शरीर है, वो ही एक पात्र है जिसके अंदर ये आत्मा की जो दीप है, जो हमारे अंदर मन के जो कंटेनर है, जो पात्र है, जिसके अंदर हमारे बुद्धि का जो पात्र है, वो सब हमारे इस शरीर के अंदर है। दूसरा, इस दीप के अंदर वो तेल है और इस तेल के वजह से ही हमारा ये जो दीप है जलता है, जो प्रकाश है वो प्रज्वलित होता है, क्योंकि उसके अंदर वो तेल है। तो श्री माता जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा में इस तेल को स्निग्ध कहा है या स्नेह कहा है, और ये बहुत मुलायम है और ये और कुछ नहीं है लेकिन हमारे अंदर प्यार है। जो निर्लिप्त प्यार है वही वो हमारे अंदर, हमारे इस पात्र जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो तेल है वो है ये निर्लिप्त प्यार। और हमारे अंदर वो प्यार होना चाहिए, और वो जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलती है तो हमें समझ में आता है। और तीसरी चीज जो है वो है बाती, मतलब द विक। अभी आत्म साक्षात्कार के पहले श्री माता जी कहती कि हमें न मालूम है कि हमारे अंदर बाती है, न हमें मालूम है कि हमारे अंदर प्रकाश है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है वो हमारे अंदर बाती की तरह है और वो उस आत्मा की प्रकाश को प्रज्वलित करती है, और वही दिवाली है। वही दिवाली का महत्व है कि हमारे अंदर वो आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित हो। और जब हम दीप जलाते हैं घर पे, ये हम बताते हैं कि श्री माता जी हमारे इस आत्मा के प्रकाश को आप हमेशा प्रज्वलित करें। और सहयोग में श्री माता जी के आशीर्वाद से ही दिवाली बनाई जाती है सही मायने में, क्योंकि ये केवल बाह्य में नहीं है लेकिन अंदर में सही में दीप जल रहा है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब सहयोगी एक साथ हो तो वही दीपावली है, और दूसरे लोगों को भी हमें उस दीप को जलाना है। दूसरी स्पीच 1985 में उन्होंने और सुंदर तरीके से बताया है कि अगर हमें इस दीप को कंटिन्यूअसली जलाना है, निरंतर जलाना है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें 2 चीजों की देखभाल करनी है, न कि ये कंटेनर की, न कि ये पात्र की, न कि ये देह की, लेकिन उसके अंदर जो बाती है उसकी हमें देखभाल करनी है, और जो तेल है उसकी देखभाल करनी है। इसका मतलब है, वो कहती हैं कि जब दीप को जलाना है और वो दीप बहुत ब्रिलियंट, मतलब प्रतिभाशाली दीप होना चाहिए, एकदम सुंदर दीप होना चाहिए, तो उसके लिए जो तेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तेल साफ नहीं है तो फिर धुआं आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में अगर हमारे अंदर वो स्नेह नहीं, मतलब मित्रता की जो प्यार है उसी को स्नेहा बोलते हैं, अगर उसमें स्निग्ध नहीं है, उसमें जो सौम्यता है वो नहीं है हमारी जिंदगी में, तो ये दीप अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होता है। अगर उसमें अशांति है तो भी दीप प्रज्वलित नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में, अगर हमें उस दीप को अखंड रखना है, तो उसके लिए जो तेल है वो है प्यार। हम बाहर की तरफ देखते हैं कि बाहर
बाय की तरह में हम अखंड दीप जला के रखें और अगर बुझ जाए तो हम अपसेट हो जाते हैं, वो तो बाह्य में हो गया। लेकिन सही में हमारे अंदर हमें अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए केवल प्यार से ही हो सकता है। और दूसरी उन्होंने कहा कि उसके अंदर वो खुशबू भी होना चाहिए, और वो खुशबू तब आती है जब गुरु के जो प्यार है, गुरु के जो चरण है उसमें आ जाते हैं, और वही है श्री परम चैतन्य। तो जब हम इस परम चैतन्य जो आत्मा का प्रकाश है उसे हम सब जगह पे फैलाते हैं, तो वो न केवल प्यार है लेकिन उसके अंदर खुशबू भी आ जाती है। और इसीलिए हमें सब जगह पे इसे फैलाना है। लेकिन वो कैसे फैलाना है, वो है कि ज्वालामुखी होके नहीं, लेकिन जैसे एक चंद्रमा की जो प्रकाश है जो कितना सौम्य है, वैसे ही हमें सहयोग को फैलाना है। और सारे जो गृहलक्ष्मी के तत्व, जैसे हमने सीखा कि सारे घृणा को, तनाव को, सारे इस सहयोग के जो सामूहिकता में जो टकराव है उसे निकालते निकालते एक बहुत सुंदर समाज हमें बनाना है। और उसके लिए समय लगता है, धीरे धीरे होता है। और जैसे एक पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ती है और हमें समझ में भी नहीं आता है कि कैसे शाखाएं नीचे जाती हैं और कैसे एक फल होते हैं, जैसे फूल हो जाते हैं, वैसे ही हम कैसे एक सुंदर सहयोगी बन जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये नैसर्गिक है। और उसके लिए हमें कुंडलिनी की देखभाल करनी है। और उन्होंने एक और चीज कही है कि अगर जब ज्वाला जलती है तो ऊपर की तरफ आती है, और वो जो जड़ता है, जो इस जड़ तत्व को है, उसको जलाती है। वैसे ही हमें भी हमारे सारे जड़ तत्व को जला देना चाहिए कि हम हर चक्र में जो घुस जाते हैं, पैसे में, या हमारा चित्त अलग चीजों में भटक जाता है, उसको जलाते जलाते हमारे मन, अहंकार, प्रति अहंकार, इस शरीर को जलाना है। जलाना मतलब निर्लिप्त हो जाना है। तभी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तभी हमारे अंदर महालक्ष्मी तत्व का जागृत होता है। तो इस अमृतवाणी से हम ये समझते हैं कि हमें ऊपर की तरफ आना है, और वो जो सुंदर प्रतिभाशाली जो हमारी आत्मा का जो प्रकाश है उसको हमारे निर्लिप्त प्रेम से हमें बढ़ाना है, और जो शांतता है हमें उसको बढ़ाना है। आइए अब हम ये जो सुंदर श्री माता जी की जो 2 अमृतवाणी है, दीपावली पूजा 1988 और दिवाली पूजा 1985 को सुनते हैं। Today we are here, all of us, to celebrate the Diwali, that is Deepavali, meaning the rose of lights. In the darkness of Kali Yuga, when you find from every place confusion of the worst type, creating the darkness which cannot be penetrated into, which looks like a solid mountain around us, and which can never be covered as we feel. By the grace of God, and even with the grace of God, it would never melt. In that darkness, in that hopeless state, when the creation is on the verge of its destruction, the light of Sahajoga has arrived. And you are the lights, you are the deepas, you are the little lights which were waiting to be enlightened to see for yourself
What's wrong within your own lamp? What's missing in your own lamp? Now, in the lamp, you have three things, as you see. One is the container. Container is this body. Container is this mind. And the container is this intellect. And the container contains within us itself is the oil. In Sanskrit language, it's called as snigdha or sneha, means the love. Is the love that is within your mind, within your body, within your existence itself. But this love is now limited. It is in a dormant state. It doesn't express itself. It can spill out in wrong directions. It may spoil some things which are beautiful. This love, when it is limited, is very dangerous. But when there is a third thing within you, which we call as the bhati, is the wick. And this wick is the pure desire within you, which is not yet lightened. It is not aware of itself. Nobody is aware, the lamp is not aware that there is a light within itself. All these three things have to combine to give that light. Today we have assembled here to celebrate the Diwali, the Deepavali. Actually, only after Sahaja Yoga started, the real Diwali is taking shape. We had many beautiful lamps and we had lot of oil to burn, but there was no spark to enlighten the deepas. And the wick, as you call it, is called as bhati in Hindi language, is like your kundalini. So the kundalini had to meet the spark. The beautiful lamps were all a waste, purposeless, pointless. And this is the great blessings in modern times, that so many lights are enlightened and we are having a Deepavali of human hearts. When you become the light, you don't worry about the lamp, how it looks, how it is to be made. It's all done. You just have to worry about the flame, about the oil, because it's the oil that burns and gives light. In Sanskrit language, which is the language of the gods, the oil is called as snigdha. Snigdha is something that is soft, but it's snigdha. And sneha means
friendship of love. And the poets in other languages have used this word in different way, calling it Neha. They have sung the praise of this love. Every poet, every saint has used this word in their beautiful poetry, whether they were in separation or they were in the meeting, in the yoga, in the union. This love is the thing that gives the light. If this oil is not clean, contaminated, you get the smoke. But is pure, then it gives a brilliant light without any smoke. But when this oil is fragrant, then the light gives the fragrance as well. The oil is made from various things. The one that comes from the Mother Earth cannot be used because it's very materialistic, it gives carbon. Like petrol, kerosene, it pollutes the atmosphere. Then the one that comes from animals, who are, some of them are very much worshipped in India, they have a very particular type of snigdha, or we can call it ghee or oil, which is giving a light which is very soothing and peaceful. So when matter evolves into animal state, also the oil evolves. But when this oil is rubbed onto the feet of a saint, it gets the fragrance. In the same way, if this oil is brought in contact with flowers, it gives fragrance. So the feet of a saint are like the flowers on the tree. And when the flower falls on the ground, the Mother Earth, it's so delicate, it's so sensible, it doesn't hurt her. It falls with great reverence as a great homage to the Mother Earth. In the same way, a saint has to be gentle. Gentle in the way the moonlight falls upon this earth. It is light without any burning in it, no scorching. That gentleness one has to develop out of the oil that is the love in your heart, which lubricates everything, which removes the frictions and soothes. You have seen the way nature works. We never see a flower opening out. We never see the fruit coming out of the flower. It is so gentle and so slow that the movement is not seen by these human eyes. Because the nature wants, you should not be disturbed by the movements. The nature cares. So you people do not feel the growth, the movement, and the explosions of the evolution, or we can say the movement of nature's own behavior. In the same way, a saint, a Sahajogi, has to move very smoothly in the society of Sahajogis. It is with the Sahajogis, I said.
not with the non-sahajas. Nature reacts to anything that is foreign. It throws out anything that is not sahaj. In the same way, a saint should not accept anything, anybody who is foreign to sahaj behavior. When it deals with the matter, with the materialistic people, then it acts with the greatest wisdom as the tip of a root. It moves with majesty, embeds itself into the Mother Earth, going round all hard rocks and holding them together, it makes the tree to stand up erect. The sign of life is that it goes against the matter, the one that is jada. Like the tree goes against the gravity. Like the great human beings have lifted their body against the gravity in a straight posture. In the same way, if you see the flame goes against the gravity, nobody has heard of fire going from the top floor to the ground floor. It starts from the ground floor and it goes upward. But the fire also comes from the matter which is burning. So the matter has to be burnt if you want to rise. If your attention is all the time towards baser things, materialistic things, towards physical pleasures, you cannot rise. You may do any amount of meditations, use my photographs, come to my pujas, but if your attention is embedded, it's like you are standing on a crocodile trying to get into a boat. Now that doesn't mean when a flame burns, it gives up matter. But it gets detached and it burns it. So this body, this mind, this ego, this superego is all to be burnt to keep this flame burning all the time. You don't have to give up anything, but to use the same thing for a higher life. And that is what should be the aim of every sadhu. Actually, after getting realization, you just start spontaneously giving because you are the light. But respect your light and the light of others. The darkness is too much. And we need so many lights to remove this darkness. These lights are to be maintained, to be looked after, to be loved. जय श्री माता जी। आइए अब हम ध्यान में जाते हैं और जो आज हमने श्री माता जी से अलग अलग लक्ष्मियों के बारे में सुना, तो उनको हमारे हृदय में याद करते हुए हम ध्यान में जाएंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसे कहते हैं अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, जो 8 लक्ष्मियों के बारे में है। उसे अब हम सुनते हुए उस ध्यान की अवस्था में जाएंगे। जैसे श्री माता जी ने कहा कि संस्कृत भाषा जो है वो देवों की भाषा है, और जब हम उस भाषा में जब हम गाना गाते हैं तो बहुत सुंदर चैतन्य बनता है।
लेकिन जब हम उसको समझते भी हैं तब हमारे हृदय में वो भावनाएं और ज्यादा आती हैं। तो अभी ये जो संस्कृत की जो श्लोक है उसकी जो सबटाइटल्स हैं वो भी हम हिंदी में डाल रहे हैं और इंग्लिश में भी निर्मल ज्ञान प्रोग्राम के चैनल में उसे हम डालेंगे बाद में। तो आइए हम दोनों हाथ माँ के सामने रखेंगे और उस शांतता में हम बैठ जाएंगे। श्री माता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी ये जो श्री लक्ष्मी जी के अनेक जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाए और न केवल हमारे अंदर आ जाए, वो हमारे अंदर जागृत हो और हम उसको प्रैक्टिस भी करें ताकि ये जो दीप है वो हमेशा जली रहे और हम दूसरों में भी इस प्रकाश को हम दें, ताकि ये जो दीपावली है, जो दीपों की जो पंक्तियां हैं वो हम आपके श्री चरणों में अर्पित करें। जय श्री माता जी। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय मां। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय मां। ऐकिली कल्मिष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमयी क्षीरसमुद्भव मंगलरूपिणी मंत्रनिवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणास्त्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी सदा पालय मां। जय 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 वरवर्णिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्रस्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनास्त्रित पादयुते भवभयहारिणी पापविमोचनी साधुजनाश्रित पादयुते
मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये। रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनोते। हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते। हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयोते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां। ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमये। गुणगणवारिधि लोकहितैषिणी स्वरशब्दभूषित गाननुते। सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते। सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी सदा पालय मां। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी सदा पालय मां। जय कमलासिनी सद्गतिदायिनी ज्ञानविकासिनी गानमये। अनिदिनमर्चित कुङ्कुमचन्दन भूषित वासित वाद्यनुते। कनकधरास्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपदे। कनकधरास्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा पालय मां। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा पालय मां। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये। मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे। नवनिधिदायिनी कलिमलहारिणी कामितफलप्रद हस्तयुते। नवनिधिदायिनी कलिमलहारिणी कामितफलप्रद हस्तयुते। जय जय हे मधुसूदन
कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम्। धिमि धिमि धिन्दिमि 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 धुन्धुबिनाद सुपूर्णमये। धुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनी अष्टलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनी अष्टलक्ष्मी सदा पालय माम्। अष्टलक्ष्मी सदा पालय माम्। अष्टलक्ष्मी सदा पालय माम्। अब हम इसी शांति की अवस्था में निशब्द ध्यान में कुछ देर बैठेंगे।
जय माता जी। अब हम 3 महामंत्र कहेंगे। May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. Good night. Good night. Good night. Good night. आखिर में हम आज ये समझें कि आज हमने क्या क्या श्री माता जी से सीखा। दिवाली पूजा के बहुत सारे तत्व हैं, नाभि चक्र के बहुत सारे तत्व हैं। आज हमने केवल 4 चीजें श्री माता जी से समझा। एक है कि जो दिवाली है वो न केवल हमारी जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए, केवल उसके लिए नहीं है, लेकिन सारे जगत की आत्म साक्षात्कार के लिए। तो जो आत्मा का जो प्रकाश है वो हम सब में प्रज्वलित करें, वही दिवाली की सबसे मुख्य तत्व है। दूसरा, हमने आज गृहलक्ष्मी तत्व के बारे में समझा और ये समझा कि ये जो है गृहलक्ष्मी तत्व का हमें गौरव करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए और हमारे कुटुंब में जो प्यार है जब वहां हम बढ़ाते हैं तभी वो बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ, समाज की तरफ हम उस प्यार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन घर की शांतता के लिए घर में वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरे, हमने समझा अलग अलग लक्ष्मियों के बारे में श्री माता जी ने जो कहा
जो श्री आद्य लक्ष्मी, श्री विद्या लक्ष्मी, श्री सौभाग्य लक्ष्मी, श्री अमृत लक्ष्मी, श्री गृह लक्ष्मी, श्री राज्य लक्ष्मी, श्री सत्य लक्ष्मी, श्री भोग्य लक्ष्मी, श्री योग लक्ष्मी, इन सारे लक्ष्मियों के बारे में जो श्री माता जी ने इतना सुंदर हमें बताया, उसका जो अर्थ, लेकिन ये भी बहुत मुख्य है कि वो हम अपने जीवन में उस तत्व को उतारे, हमारे जीवन में हमारे बदलाव लाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आशीर्वाद हमें श्री माता जी से मांगना चाहिए। आखिर में हमने देखा कि दिवाली की जो महत्व है, वो जो प्रकाश है, उसका मतलब क्या है, और वो है कि हमारे जैसे दीप में 3 चीजें हैं, एक है पात्र, दूसरा है तेल और बाती, वैसे ही हमारे अंदर इस शरीर जो पात्र जैसा है, उसके अंदर कुंडलिनी ही बाती है जो आत्मा को प्रकाशित करती है, और हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश हम सब में दिखता है वो कुंडलिनी की कृपा से है, श्री माता जी की कृपा से है। लेकिन इसको हमें बढ़ाने के लिए हमें जो तेल है वो है प्यार, जो है स्नेह, जो है स्निग्ध। तो हमारे जीवन में हमें वो सौम्यता लानी है और उस प्यार को धीरे धीरे पूरे जगत में हमें बढ़ानी है। ये जो दीपों का जो पंक्तियां हैं, जो दीपावली है, उसे सही मायने में अगर हमें करना है तो हमें पूरे समाज में आत्म साक्षात्कार को फैलाना पड़ेगा। और यही जो इच्छा है, हम दीपावली में श्री माता जी के सामने दीप जलाते हुए, दीपों की पंक्तियां जलाते हुए, उस तत्व को हम उनके श्री चरण में अर्पित करते हैं। तो आइए हम श्री माता जी से बार बार उनकी धन्यवाद करें कि उन्होंने इतना सुंदर प्यार उन्होंने हम सारे बच्चों को दिया है, और इतना सुंदर तरीके से हमें न केवल दीपावली के बारे में हमें बताया है, लेकिन हमारे हृदय में उस प्रकाश को भी प्रज्वलित किया है जो सही में दिवाली है। तो उसके लिए श्री माता जी आपके श्री चरणों में शत कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।